is the population interactions. The interaction in between the two species vary greatly. First one is the predations, means the one species eating to the another. Second one is the commercialism, means the taking help, and the mutualism, helping each to other, the parasitism, harming to the other. Then all these interactions are derived through a common underlying need for the survivals. Then, during early embryonic development, okay. Then we start the competitions, means the interaction in between the organism or species in which the fitness of the one overpower the presence of the another. ये क्या है कि कोई एनिमल अगर वो ताकत में या जो अगर हम कहें कि वो बड़ा है या छोटा है, ये डिपेंड करेगा, जो ताकतवर है वो दूसरों पर अपने आप को जाहिर करेगा. Then limited supply of the resources is one of the primary reason for the competitions. Means the animals, in the animals, competitions means the resources is less and the population is high, therefore the competitions takes place. Then the organism is compete for the resources such as the food, water and the territory. Then they also fight with the other members of the same species for the mate or the mating. Then the competitions plays a critical role in the natural selections. This is the main steps of the competitions, and we can say discussing about the competitions. Then survival of the fittest. It states that the species less situated to compete for the resources should either adopt or the perish. The Charles Darwin get the survival of the fittest state that in the competitions the organism having the suitable variation survives as compared to the other. The mechanisms of the competitions occurs in the various ways. Means the survival of the fittest given by the Charles Darwin. Then types of the competitions. First one is the intraspecific. The competitions in between the individuals of the same species, the animals having the same species, in between these two the competitions takes place. This is called as the intraspecific struggle. Then competitions, the members of the same species fight for the same resources in the ecosystems. Examples, the two trees of the same species growing close together for compete light, water and nutrients. Means these two plants, or in these two plants as the resources is same, and these two trees belongs to the same species, and in these two the fight for the same resources is called as the intraspecific. Second one, the intraspecific struggle, the competition in between the two separate species share the same resources. In the same area, leopard and the lion are different species and both feed the similar prey. Means the two different types of the species of the animals like the leopard and the lion, and they are having the same, means the same, and these competitions is called as the intraspecific competitions.
Then one is the mutualism. What is the mutualism? The term symbiosis is a Greek word living together can be used to describe these relations which in the between the organism of the different types of the species. First one is a mutualism. Is the kind of the positive interspecific interactions in which each member's favor to the growth and the survival of the each other and their associations is obligatory. Example is a lichen. Relations in between the algae and the fungi. अब इसमें क्या है कि ये म्यूचुअलिज्म ऐसे एनिमल्स के दौरान में है जो एक दूसरे के साथ रहकर लेन देन करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअलिज्म. इसकी मिसाल है हमारे पास लाइकेन है जो अलगी और फंगस से मिलकर बना है. तो ये अलगी और फंगस मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम करता है. अब ये लाइकेन जिसमें अलगी ये कलर के लिहाज से अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर की है, फंगस जो है ये ग्रे कलर का है, ये कलरलेस है. अलगी क्या करेगी, ये जो है सूरज की रोशनी में अपने लिए जो है ये ग़िज़ा तैयार करेगी. फंगस जो है क्या करेगा, फंजाई जो क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर से ये पानी को जमा करेगा, ये अलगी को देगा. अलगी जो है इसको यूज़ करके जो है क्या करेगी, ये ग़िज़ा तैयार करेगी और जो है फंगस को देगी और ये दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. इस तरह की खुसूसियात को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है. तो म्यूचुअलिज्म जिसमें के एग्जाम्पल है हमारे पास लाइकेन. नेक्स्ट वन, कमर्शियलिज्म is a relation in between the two organisms or benefited and the other is neutral. इसमें क्या है कि ऐसे एनिमल्स जिसमें सिर्फ एक एनिमल क्या करेगा, फायदा हासिल करेगा और दूसरा क्या करेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, इससे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा. देयर इज अ नो हार्म और द नो बेनिफिटेड, यानी कि वो अपने होस्ट को या जिस पर ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है इसको किसी किस्म की कोई जो है हार्म भी नहीं करेगा या उसको कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगा. द कम्युनलिज्म इज़ अ शेयरिंग फूड और द टेबल, यानी कि कोई ऐसे जो है खुशियात अगर हम देखें तो ग़िज़ा को बांटना है. इसकी एग्जाम्पल है ऑर्चिड ग्रोइंग एज अ एपिफाइट ऑन द ट्री एंड द ऑर्चिड गेट सपोर्ट. ये बड़े जो है दरख्तों पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और जिससे ये क्या करेगा कि अपने लिए जो है वहाँ पर जो है क्या करेगा, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और उससे सपोर्ट हासिल करेगा. इज़ अ barnacles on the back of the whale. Then sea anemone is a Adamsia pelicata is a found to the attached to the snail shells used to portable home by the hermit crabs. ये hermit crab से जो है अटैच होकर जिसको के यूपेरेगस प्रेडियोक्सी जिसे कहा जा रहा है कि ये क्या करेगा, दूसरे एनिमल पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और ये अपनी ज़िंदगी गुजार कर जो है क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा. Then sea animals carried out one place to the another place by the moving of the crab and is benefited by the getting more opportunity for the food. ये अपनी ज़िंदगी उसके पीठ पर रहकर ये है ये क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगा जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और ये जो है क्या करेगा, अपने लिए फूड हासिल करेगा या ग़िज़ा हासिल करेगा. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सक्कर फिश. Akin is attached to the under surface of the shark. This type the fish is called as a sucker fish attached to the shark fish with the help of the dorsal fin. Dorsal fin की मदद से ये जो है कि sucker fish क्या करेगी, ये अटैच होगी किसके ज़रिए, ये अटैच होगी बड़ी जो है मछली जिसको कि हम शार्क फिश कह रहे हैं एंड गेट्स फ्री राइड. ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे. एंड द सेम स्टाइल ऑफ द पायलट फिश रीमोरा
getting the small pieces of the fallen food without the attachment. ये ऐसी मछली है जिसको कि हम रेमोरा कह रहे हैं. तो ये भी क्या करेगी, जो मुंह से निकलने वाली, जो मछली के मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे जो ग़िज़ा के जो टुकड़े हैं, जो कि शार्क मछली के मुंह से निकल रहे हैं, तो ये इसको भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेगी. और इसी के तहत जो है क्या करेंगी, ये रेमोरा फिश जो है ये बड़ी मछली के साथ जो है नीचे होते हुए या आगे बढ़ते हुए जो है ये ग़िज़ा हासिल करेंगी. तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारी, जिसमें कि सी एनिमोन्स है, सकर फिश है एंड दी पायलट फिश है. तो ये अपने साथ ग़िज़ा हासिल करेगी. बंद करें, स्टार्ट. देन द पैरासिटिज्म, इट इज़ अ type of the symbiotic relationship organism in the different species where one organism is parasites and the other is the host, and the parasites are smaller than the host and the parasites are faster growth than the host, and the parasites are of the two types is ectoparasite and the endoparasites. Means the parasites are present outside the body of the host is called as a ectoparasites, and for the feeding the parasite presents inside the body of the host is called as a endoparasite. And the parasites is nothing but the relationship in the organisms as a different species where one organism get parasites and the other is the host, and the parasite also the smaller than the host, and the parasite are the faster growth and get benefited from the host, and on the basis of it living inside or the outside. When it living outside, it is called as an ectoparasite, and the living inside is called as a endoparasites.